गुड इवनिंग देवी और सज्जनों, थेम्स स्पीक्स के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। थेम्स स्पीक्स एक ऐसा कार्यक्रम जो थेम्स के किनारे होने वाली सारी पॉजिटिव स्टोरीज को अपने सिरों में अलग अलग तरीकों से गूंथ कर आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। इन स्टोरीज में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो ज़िंदगी में एक इंसान की खुद की जीवन यात्रा भी है और इंसान की एक समाज के साथ चलने वाली जीवन यात्रा भी है। आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि थेम्स के भाग्य का निर्धारण है अगले कुछ वर्षों के लिए। यदि आपने वोट नहीं किया तो आज है हमारे थेम्स, आज हमारे लंदन के मेयर का इलेक्शन है। 10 बजे तक बूथ्स खुले हैं। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के बाद आप उठेंगे, यदि आपने वोट नहीं किया तो आपके भाग्य का निर्धारण आपका वोट करेगा। इस जनतंत्र में, इस लोकतंत्र में हम सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। हम इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में जब हम बातें करते हैं तो हमने ये देखा कि वो थी राजनीति की बातें, लेकिन राजनीति के अलावा हम इंसान और समाज का एक और पहलू जिसे हम कह सकते हैं सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष वो पक्ष है जहाँ पर सहवीर्यम करवाव है, जहाँ आदमी खुद को छोड़कर पूरे समाज के लिए सोचता है। वो ये सोचता है कि सभी के साथ जीवन कैसा चले, सभी की जीवन यात्रा सुखी रहे, सभी एक साथ उठे, सभी एक साथ भोजन करें। वो जो उदात्त भावना है, उस भावना के साथ आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ अनेकों गेस्ट हैं और उसी गेस्टों की उस श्रृंखला में मेरे पास कुछ चीज़ें जुड़ी हैं जिसमें मैं बहुत महत्वपूर्ण है रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियाँ, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है जब विपत्ति आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो जो कांटों भरी रास्ता है ज़िंदगी का, उसमें जो रास्ता बनाने वाले लोग हैं वो है सूरमा। वो अपना धीरज कभी नहीं खोते। आज का जो समय है, आज का टाइम बड़ा अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेन और बहुत चैलेंजिंग टाइम है। लोगों की व्यक्तिगत ज़िंदगी में और लोगों की सामाजिक ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव है और वो बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण है पूरे विश्व में एक पेंडेमिक जिसका नाम है कोरोना वायरस। पर इस कोरोना वायरस की और इसकी नेगेटिविटी के एस्पेक्ट पे चर्चा से पहले हम इसकी पॉजिटिविटी के एस्पेक्ट पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि संकटों में, बाधाओं में, विघ्नों में इंसानियत का और लोगों के अंदर की हकीकत सामने आती है। हो सकता है उससे खूबसूरत इंसान भी बाहर आता है। इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। आज हमने चर्चा करने का निर्णय लिया है एक बहुत पुराने फाउंडेशन में, वो है माँ कृपा फाउंडेशन, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2009 एंड द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट फाउंडेशन वॉज टू हेल्प all those people, not only in UK, even on a global level, those who are in need. And they have done a lot of things. So I would like to welcome Mr. Ramesh Popat, who is a trustee of that particular charity organization, and he has done amazing work. So we would like to discuss about all those things which they have done in the past and what are their future plans and what is the role of other trustees in this Maa Kripa Foundation. I would like to welcome Shri Ramesh Ji Popat. Hello, good evening, Harendra. Good evening. Very nice to talk to you. It's good to see you here. Thank you very much again. It's a chance to talk about ourselves. I'm a trustee of my foundation, and the foundation has got trustees at the moment. There's a supporter also. And the 5 trustees, we've got our chairman called Jantibai. His name is Jantibai Kagram. And then we've got Kataria, then Vishnubai Shah, Bababai Kataria. And apart from that, we've got Prabhudas Bhai Modi. So we are total 6 people in it. Which year you established this charity organization? This charity was established in 2009, sometimes in November. And it's got a very nice story. There were 5 friends together, and they were thinking what to do. And those 5 friends, they were arguing of the people, those who were actually trustees at that time. Their name is Ashok Dalia, Ishwar Raya, Rajni Bhai Chotai, Raju Bhai Kataria, and Jayant himself. They thought of forming a charity, and so in their words said, Ma. This is Ma, then what we should Ma
Ma Krupa. So without Ma's Kripa, you don't get anything. So it's Ma Krupa Foundation. And for the symbol, they said we do. So we pray always to Jala. So as a head, and all the say blessings we use, it was his. This we thought that it was authorized by them, him himself, for this. तो ये स्टार्ट हुआ था 2009 में, and the first मैं इसमें बस एक छोटी सी बात और पूछना चाहता हूँ आपसे। ऐसा क्यों डिसीजन लिया कि उसका नाम माँ कृपा फाउंडेशन होना चाहिए, या इस नाम को रखने के पीछे भी कोई रीजन हो? कि माँ के नाम के पीछे एक रीजन ये है, माँ सबको प्रेम देती है, माँ एक गुरु है, माँ की ममता। तो माँ जो है तो उसके जो विचार है उसी विचार से हमें आगे जाना है, हमें अंदर प्रेम भावना नहीं है, हमें कोई सहायता देनी है। इन लोगों को विचार है क्यों ये ना करें, तो माँ के नाम के ऊपर जैसे ये है और सबके विचारों के साथ मिलकर ये नाम दे दिया उन्होंने। So tell me about the journey of Ma Kripa Foundation from 2009. Yeah. I also gathered you have done different type of activities. I was waiting for Rashmi Bhai to join us soon, and he will also give something more. Charity. First thing they organize religious katha, Bhagavad Katha, and they approached everybody. And it was 7 days, so overwhelming, and they enjoyed so much. And people supported so much that they had inspiration that why not go further. So they started organizing events, छोटे-मोटे events करने लगे. You know, they had like Father's Day, Mother's Day, Valentine's Day, etc. उसके बाद जो उसके अंदर सर 9 days के बाद अगस्त के अंदर they started doing some journeys outside. तो ये इंस्पिरेशन बढ़ती गई जैसे लोग उनको सहाय देने लगे. And they said there's lot of सबके अंदर सबके इसलिए क्या कहते हैं, they willing to give donations and they want to do good for the human beings, मानव जात. So we said okay, in anything we should go ahead. They continued in that. So जैसे आगे वो बढ़ते गए and devotionally ये बढ़ता गया आगे, तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो दूसरे trustees they aged up, they are, and then myself, there's a Mahesh Bhai, Ramesh Kaur, myself, and Rashmi Bhai Shah joined along. So, and Babu Bhai was already there. So it was 5 people, a team we've been working. Everybody's over the age of 70. And the oldest one is about 83 years old. So I can see that this is an old friendship. You grew up together, you're friends, finally you set up a charity, and this is, you also go, लाइफ में एक आपको उद्देश्य मिला है इस जीवन के इस पड़ाव में, जहाँ मुझे लगता है कई बार कि 60-70 के बाद लोग जिंदगी की कई आशाएं और अपेक्षाएं छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि जिंदगी में जो करना था वो कर लिया. बट आई कैन सी यू रीइग्नाइटेड और यू हैव गिवन अ डायरेक्शन टू योर लाइफ. कई बार ऐसा लगता है कि इतने सारे जो काम है, इन कामों को करने के लिए अलग अलग तरह के लोगों को शायद भगवान ने इस दुनिया में भेजा है. सो यू गॉट दैट एम एंड एम्बिशन. कैन यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट those activities which you have done recently in last 3 years? Before I go to the activities, I would like to talk about this Rashmi Bhai, I mean Jayanti Bhai first. Jayanti Bhai Kagram, he is from Uganda. He was born in Uganda. When he and he told everybody to go out, and this time everybody immigrated here. So you can, since 1972 he has been here. So he went through naturally. The difficult thing is for children, he brought everybody up, and he's been in the business for last years. And life, and because of that, when he was brought up in that environment where the mother is not, the father is there, and and the other sisters are there, so that gave him more encouragement and thought
to go with all this option. So my organization is always commanding us, not command, he's giving drashti. वो हमें बताते हैं कि ये हमने करना चाहिए, हम सब मिलके करते हैं. Everybody brings their own opinion in that. ऐसे. तो ये हुआ. उसके हमारे पास है ये जो भाई कटारिया, he lives in this London, now he's in South Tennessee, and he also been in the business on that. So he's also with a charity for a long time. Puts his also work in that, and they are all studied and learned it. उसके बाद रश्मि भाई जो शाह है, he in India, and I think he will be able to about him and that. Now Ashok Bhai Shah, Ashok Bhai Dalia, when he came here, he was about 14 years of age. So his father, Mr. Dalia, he was the one brought. He was in the business, and he was inspired. And the father did a lot of work, for the other organization also. And he joined us, and then he started helping us. But with myself, I come from Nairobi, born in Nairobi, and I was there until 1968, 44, 68, and I worked in telecommunications and all that, and for radio station. Then I came here and got married, went back and got married. I think a lot of people, they do not know कि आप पहले रेडियो में काम करते थे और रेडियो में आपका एक बहुत सफल करियर रहा. I had a discussion with you, and then I realized you are a multi-talented personality who worked not only in radio. You are a very good cook, you are a very good gardener, you are a very good florist, and a very good decorator. So normally men doesn't possess all these skills. I think all these skills and multitasking skills we left, especially in Asian tradition, we left on ladies' hands. We are just मल्टीटास्किंग का बात क्या भाई कि जीवन में जब ये होता है ना, जैसे संजोग थे, जब भी हम यहाँ आए इतनी डिफिकल्टीज थी. There was everything was there. It was very difficult for us to survive. जॉब्स मिलते थे वहाँ. उसके बाद जब ये रहने आए तो छोटे छोटे मकान थे, एक कुकर के ऊपर सब डिफरेंट खाना पका रहे हैं, हम वो दूसरे भी खा रहे हैं. The difficulties were, we try to come out of that by working hard. And we work so much hard, husband and wife and all that. Similarly, everybody, all the things worked hard. And we faced, as we went through, we know that communication, because what happened at that time, if you're not with a member of, you not get a job. So you have to divert yourself, because you need roti to chahiye khane jeene ke liye. I agree. So we have to divert ourselves. So that brought into the post office, etc. And then after selling that, I had to do something else. But God bless, being multi-talented. हम प्रोग्राम के नेक्स्ट स्टेज में जाएं उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस वन ऑफ आवर गेस्ट. His name is Rashmi Bhai Shah. Fortunately, due to technical reason, he was not able to join. But because COVID has taught us the real meaning of Doordarshan, we can even meet with social distancing. We are miles apart, but still we are very close to each other. So I would like to introduce and welcome Rashmi Bhai Shah on this program. Thank you. Rashmi Bhai, can you hear me? It seems I'm not able to reach to him. Okay. Rashmi Bhai, welcome. Good evening to you, and I hope you are able to hear me, and it's great to connect to you today. Namaste. Namaste. Kuldeep ji. I can hear you. I don't know whether you can hear me or not. We can hear you. It's great to hear you today. और हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि रमेश भाई से कि माँ कृपा फाउंडेशन ने 2009 के एस्टेब्लिशमेंट के बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ की, और आप हैविली उन सारी एक्टिविटीज से जुड़े रहे हैं जिनमें मैं कह सकता हूं कि लोगों को एक जगह बांध के और थाम के रखा. तो कैन यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट दोज एक्टिविटीज which were beneficial for the society? In fact, we normally start our activities earlier in the year by having eye camp in India, because when it comes to January, February time, we go to India personally
all our trustees go there on our own expenses and visit the eye operations over there. It being always happening in January, February time, this eye camps are the first kick as far as our events in Mark Rupa Foundation is concerned. And from there, I think all the other events which we do from time to time kicks in. Eye camps have been very successful. We have been doing this for last 3 years. And by now, I think we must have done about 8 to 10,000 patients cataracts operation. And In all 3 year the money time? has been In 3 year No, time, you have done. In 3 year altogether time, in you have 3 done years. around 10,000 patients. That's right. That's yeah, a in about huge last number. three- And I think it is. sometimes we feel कि जहाँ से हम हैं उन लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, जहाँ से हमारा Yeah. संबंध है. There is a very famous poet. He has written, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का कोई अर्थ नहीं है. ये बशीर बद्र ने बहुत साल पहले लिखा कि जो भी संबंध है वो संबंध सुख के समय के संबंध नहीं, वो संबंध दुख के समय के. और जो काम माँ कृपा फाउंडेशन से आप लोग कर रहे हैं, ये शो करता है कि हम दुख के संबंधों को कैसे बनाते हैं और उन लोगों को वापस उन संबंधों की कैसे याद दिलाते हैं. शायद एक बहुत बड़ी आप लोगों की उपलब्धि है. रश्मि भाई, मुझे और ये बताइए कि जो ऐसा क्या थॉट आया 2009 में कि आपको अपने हम उम्र लोगों के साथ मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना पड़ा और आपको लगा कि ये जीवन के इस स्टेज के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें कई लोग अपनी आशाएं और अपेक्षाएं छोड़ देते हैं इस उम्र में. वो सोचते हैं कि जो जिंदगी में करना था कर लिया. आपको ऐसा क्या लगा 2009 में कि हमें ये करना है? It all started with, I think, what happened. We had one Bhagavad Katha in 2009 in July, August time in 2009. And then I think our principal trustee, Jayanti, he wanted to do another similar katha. So he approached the organizer of the first katha, and he just to take his permission whether he could do the katha or not. और ऐसा हुआ कि जब वो पूछने गया उसके तो जयंती भाई को उसने बोल दिया कि it's not easy to do a katha, and if you can do, and it was sort of a challenge to him that he can't do it. And that challenge, he took it from there, saying that if I have to show that I can also do the katha. And then after the first katha was done in June, July time, and he did the other one, which was under the name of Mark Rupa, because he thought this was the Ma's Rupa. Hence, he was challenged, and hence the name Mark Rupa Foundation came into existence from 2009. And the first katha we did was very successful one. And from then onwards, we started doing other programs like Mother's Day, Father's Day. I don't know how familiar you are with London area or England area, but there are so many Asian or Indian organizations, and none of them used to do Father's Day or Mother's Day. We being all about 70, we thought of organizing these events, and they were very successful. After about 3-4 years of our existence, we said, let's do Navratri. And we started doing Navratri for all 9 days. Initially, we wanted to keep it free to each and everyone, but then I think because of the not controlling the crowd, because if we keep it free, then I think any Dick and Harry can come and join the events, and
there is likelihood of chaos, and hence we thought let's put some fee to it so only limited person can come in, and then hence it started with that one. In Navratri, I think first year we did it on our own. Can we continue with this story, Rashmi Bhai, after the break? We were discussing about the journey. So people, those who are in this age, those who are in this stage, they can have a new hope. They can have their own settings. They can have a new plans in this phase of their life. We will continue with this conversation on Thames Speaks on MATV 711 after the break. You're incredibly lucky even to see this beautiful animal. She's one of the last precious few mountain gorillas. But her life is full of mortal dangers, like this vicious trap left to catch other animals. Will you help protect her future? Please adopt a gorilla with WWF for just £3 a month. Call 0800 038 0911 or search WWF Adopt a Gorilla and adopt a better future for gorillas today. Hellmann's Vegan Mayo has the same great taste and it's plant-based, so it's great for lunchtime filling as well as weekend grilling. Hellmann's, the UK's #1 vegan mayo. Boost the life of your clothes with Comfort's Clothes Care Treatment. It nourishes and smooths each fibre, helping to keep your clothes like new. Comfort. Long live clothes. You came to slay this peloton. Get a little savage with it. Trust us till the beat drops. You got this. Yes to you, Claire from Brighton. Core tight peloton. Say it with me, I crushed that. At home motivation, anytime you want it. We all love a bargain this time of year. Trouble is, most of it only gets used once or twice. But there is one bargain you'll use every day. Get great value fibre broadband for just £22.99 a month plus a £70 reward card. A bargain you'll use every day? That'll do. Search PlusNet Fibre now. Love that feeling? So do we. As the UK's #1 breakdown service, the AA fix 8 out of 10 cars at the roadside and can get you going again in around 30 minutes of arrival. Plus, we offer unlimited call-outs. Get that feeling. Switch to AA breakdown cover from just £6 a month. Join the AA today. Call 0800 98 08 555. That's 0800 98 08 555. You know, with EE, you get more bang for your buck, right? Watch. Not only are you getting a whopping 5G-ready 120 gig for just £20 per month, you're also getting it all on the UK's #1 network. Now that's more bang for your buck. Grab this SIM-only deal in-store, online, or over the phone this January. Looking to release some extra cash? There is a way with the Legal & General Lifetime Mortgage. My weekends away with the girls. My home helps pay for it. If you're a homeowner aged 55 or over, you could release some of the equity tied up in your home. My room-by-room makeover. My home helps pay for it. Our specialist advisors can talk you through all your options and they'll even tell you if it's not right for you. Call us free on 0808 231 2200. Legal & General for a more colourful retirement. Now is the time to switch to Co-op car insurance. So wherever you are along the road, we have you covered. With new prices and new features such as our uninsured driver promise that protects your no-claims discount, there's never been a better time to switch to Co-op car insurance. Plus, if you buy direct, you'll also get a £50 Co-op gift card. Switch to us today by searching Co-op car insurance or calling 0800 115 115. Co-op, it's what we do.
Heard about GoDaddy domain names? Go to GoDaddy to buy a dream domain name from 99p with GoDaddy. Hey, wanna know how I tidy up my wardrobe with Vinted? It's easy. If I haven't worn it in over a year, or it doesn't fit me, then I sell it on the app. Vinted is a free app for second-hand fashion. Use it to declutter your wardrobe and maybe even make some extra money. Selling on Vinted is easy. Take a picture, upload it, and set your price. You've got the chance to sell to other Vinted members across the country with no added fees, so you get to keep everything you make. Give a second life to the clothes you no longer wear. Download the free Vinted app today. If you don't wear it, sell it. The EasyJet sale is now on, with 40% off 600,000 seats and up to £300 off package holidays. Book now with EasyJet. Holidays at or protected. देवी और सज्जनों, ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है थेम्स स्पीक्स के इस कार्यक्रम के अगले आधे हिस्से में। आधा हिस्सा हमारा समर्पित था माँ कृपा फाउंडेशन की कुछ एक्टिविटीज़ पे, और उन एक्टिविटीज़ को करने वाले ज़िंदगी के इस फेज़ में हैं जहाँ लोग कह सकते हैं कि वानप्रस्थ और सन्यास की तरफ मूव होते हैं। पर इन्होंने वो शायद वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम का उन्होंने सच्चे मायनों में और सच्चे अर्थों में अर्थ खोज लिया और शायद जीवन दूसरे लोगों के लिए समर्पित कर दिया। आज का जब हम दौर देखते हैं जिसके अंदर बहुत चैलेंजेस हैं, जिसके अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं, उसको देख के बशीर बद्र ने बहुत अच्छी चीज़ लिखी कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफ़रतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। शायद उसी मोहब्बत जिसकी ज़रूरत आज इंसान को है, उसी मोहब्बत के बारे में काम करने के लिए कुछ लोगों ने अपना जज्बा और बीड़ा दिखाया है। मैं वापस स्क्रीन पर वेलकम करूंगा ट्रस्टीज़ रश्मि भाई का और रमेश जी पोपट का। वेलकम बोथ ऑफ यू, एंड इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू बिफोर द ब्रेक. वी हैड टेक्निकल ग्लिच, but finally we came over of it. So I was talking about Ramesh Ji Popat, that he is a multi-talented personality. So rather than talking something which is very serious, he also has a habit to talk nice things about certain specific things, and he was also an announcer in radio. He used to write poems. I'm not sure he still write those love poems or not. I'm not sure about that. पर जिंदगी में इनमें और फारूक अब्दुल्ला में कई सिमिलैरिटीज़ हैं. फारूक अब्दुल्ला भी ज़िंदगी के इस दौर में बहुत रंगीन किस्म के व्यक्ति हैं. रंगीन ये कि खुद की ज़िंदगी भी रंगीन है और लोगों की ज़िंदगी को भी रंगीन और रोशन करते रहते हैं. ठीक वैसे रमेश जी की ज़िंदगी भी बहुत रंगीन है और लोगों की ज़िंदगी में रंग घोलने का काम करते हैं. और रमेश जी, मैं चाहूँगा कि आप ने जो कविताएं या जिस प्रेम कविताएं जो आपने अपने दिल से लिखी हैं, उसको शायद हम सब शेयर करें. कविता शेयर कर सकता हूँ. एक आपको बताऊं, जिंदगी के अंदर से मोड़ पर आता है, जब याद आती है तो बात मैंने आपको बताया था, एक कलम तो मैं चूमिस तो लड़ी टुड़ाई जैसे. उसके साथ लिखता रहा उठ के भी लिखता रहा. मैं 15-20 मिनट में पोएम लिखूं. और ये जो कॉपी है मन दर्पण भजन अर्पण, के अंदर 130 कविता है और इसके अंदर अब 30 भजन है जलाराम बाबा का. तो जलाराम बाबा का भजन है, उसको हमने जाके ये भजन तो हमने ये बनाया. इसके अंदर क्या होता है कि जब ये बैठते हैं, एक शब्द हमारे पास आ जाता है, एक वर्ड आ जाता है. तो एक ही बात थी, अभी मैं किसी से बात कर रहा था चमकता तारा की, तो हर हस्बैंड पास्ट अवे लिटिल व्हाइल अगो. तो मुझे बात कर रमेश भाई, मैं बात करने की तारे देखे जब ये हस्बैंड के साथ जाती थी तो वो तारे देखते थे हम. तो उसमें मुझे थोड़ी सी बात आ गई, दिल में आई. वो पहला चमकता तारा है, पहला चमके मारा अंतरनी ज्योत जगाड़ी रे. पहला चमकता तारा है, मारा अंतरनी ज्योत जगाड़ी रे, मारा मन ना अपनी प्रीत खिलावी रे. क्या बात. मन ना अपनी प्रीत खिलावी रे. पहला चमक है,
અંતરની જ્યોત જગાડી દે. તેની ચમક મારા મનને ભરી દે, અમારી વીતેલી રાતોની યાદ અપાવી દે. પેલા ચમકતા તારાએ મારા અંતરની જ્યોત જગાડી દે. એની ચમક ચમકે મને ભેરી કરી દે, મારી ઓઢણીમાં તેની છાપ છપાડી. પેલા ચમકતા તારાએ મારા અંતરની જ્યોત જગાડી દે. હવે તો ઓઢણી ઓઢું ને મલકાતી મારા અંગ અંગને આપે રંગી રે. પેલા ચમકતા તારાએ મને મોંથી રીઝાવી દીધી રે, અંતરની જ્યોત જગાડી દીધી રે, मेरा मन ने जीती लीधी रहे. तो ये बात मैंने लिख दी. ऐसे तो काफी बहुत चीज है, हम तो एक प्रोग्राम बना नहीं. थैंक यू. ये थोड़ी चीज है. और मुझे ऐसा लगता है कि जो कविताएं आप लिखते हैं उनमें गहरा अर्थ है, और पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि जब आप 20 साल के 25 साल के रहे होंगे, उस ज़माने में आपने बहुत सी प्रेम कविताएं लिखी होंगी. वो प्रेम कविताएं पता नहीं किसके पास पहुंची होगी या किसके दिलों तक पहुंची होगी. जिंदगी के मोड़ पर जब भी मेरी मंगनी रही थी करीबन एक थी, तो आई रोट अबाउट 150 letters to my wife. I mean, unfortunately, she's not with us at the moment. She passed away about 3 years. शब्दों में, कामों में, जिंदगी की यादों में, किस्सों में, ख्वाबों में लोग हमेशा अपने साथ जिंदा रहते हैं. आपने देख लो इसके ऊपर से कि she was the one. इसका नाम सरोज. तो ये थी कुछ हंसती और गुदगुदाती हुई सी वो बातें हैं जो जिंदगी में इस दौर में भी लोगों में जिंदगी जीने की इच्छा इंगित करता है. मैं रश्मि भाई से पूछना चाहूँगा कि हम चर्चा कर रहे थे कथा की, पर मैंने ये भी देखा कि ज़िंदगी के इस दौर में आपने कथा से लेकर क्रूज़ पे कथा का भी आयोजन किया, और वो स्पेशली क्रूज़ पे वो सारी गतिविधियाँ की जिसके बारे में शायद जो हम जैसे जवानी की अवस्था से जो पार पाते जा रहे लोग हैं वो भी शायद नहीं सोचते हैं. तो जो आपका क्रूज़ पे कथा या क्रूज़ पे जो एक्टिविटीज़ रही उसके बारे में भी आप कुछ बताएंगे हमें? हाँ, तो एक तो पहले एक क्रूज की थी हमने 4 साल पहले, मेडिटेरेनियन, वो यूरोप में थी. वो उसमें भी वैसे हम तकरीबन 50 सदस्य रहे थे, और सभी ने बहुत एंजॉय किया क्योंकि उसमें 4 पोर्ट्स में हम निकल सकते थे और फिर भी सकते थे. और ये हमारी पहली क्रूज थी. And that cruise inspired us to do another one in about 3 years' time, which was last year in January, and that was for 15 days. It started from Dubai, so we had to fly from here to Dubai first, and from Dubai we were in a cruise, and it was going to take us to 7 ports. Started from Middle East, then it was going to go into subcontinent, and from subcontinent it was going to go into Far East. क्या क्रूज जब स्टार्ट हुई तब तो इतना स्टार्ट नहीं हुआ था कोविड यहाँ इस कंट्री में, मगर मेरे ख्याल से एशिया में, चाइना में और वगैरह में स्टार्ट हो गया था. मगर उसका जो रिजल्ट्स वगैरह हम आज देख रहे हैं वो इतना डेंजरस नहीं था जैसे आज हम देख रहे हैं. और क्योंकि मेरे ख्याल से China being a communist country, I think most of the consequences of the COVID had not come out. But as it started spreading outside in Europe, I think we knew what was it. Middle East में वैसे it all, because it's called 19, most of the rest, it had happened in China in 19, around September, October time. I've got a good friend in Washington, and he does researches on viruses.
He had come to one of the cities in Europe where people from all over the world had come to discuss the virus. And in that meeting in September 2019, China had confessed that they have licked this virus and they're going to do all their best to control it. मैं इसी पे एक बात पूछूंगा कि ये around 2019 में it started. Yeah, in this September. is 2021. Things has gone badly wrong in many parts of the world, including many European countries and even Asian countries. कई सारी economies हैं, they decimated हो गई हैं, खत्म सी हो गई हैं, या कई economic activities perish हो गई. Even people those who are working in unorganized sectors, उनकी लाइफ के अंदर शायद लाइफ टाइम रिपरकशंस उनके सामने हैं. उनके सामने ये भी संकट है कि उनकी जॉब्स चली गई, 1 साल से उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके पास खाने का नहीं है, और ऊपर से कोविड और बाकी सारी दूसरी सारी बीमारियां हैं. और कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मुझे एक बहुत पुरानी चीज़ याद है, वो ये है कि लिख रहे गीत इस अंधकार में भी तुम, रवि से काले बरछे जब बरस रहे हैं, सरिताएं जमकर बर्फ हुई जाती हैं जब बहुत लोग पानी को तरस रहे. मीन्स पूरी दुनिया हमें कहीं ना कहीं प्यास है. सो आई हैव सीन लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन यूके, इन अमेरिका एंड अदर प्लेसेस, दे हैव कम फॉरवर्ड स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस कोविड-2 वेव इन इंडिया. पीपल आर डूइंग देयर बेस्ट. सो what Maa Krupa Foundation is doing, Ramesh bhai, what they have done already and what are they planning to do in next 1 week? I'll come here. Baat is कि when we were on the cruise, we reached in Singapore, Colombo, and then we were told to come back again from there. So at that time, COVID had already reached Singapore, that side. So when we came back again, in March, I came to India, back again home. Then we found that we were told to be in the house. You can't, you're locked down. Yeah. Now our activities stopped. And now it was the biggest blow to us. What should we do? And when we all the go together, we have to do. And then we think of another katha. But how would you do it? You can't do it here. So we went on the television. So our kathas were released, were done broadcast in Mumbai. The second one was Rajkot, and then the third was. So what we do happiness to people, they were sitting at home, and this inspired us to do something at the time of the work. So we had no idea. इसे कह सकते हैं आपदा में अवसर. So this COVID has given you an opportunity to create a new version of Katha, where even Kathavachak is sitting somewhere in Mumbai or somewhere in Rajkot or maybe somewhere in the world, and people are watching in the comfort zone of their own lounge, in their own house. Yeah. And absolutely, yes. And just be by all I can be that during this period, our Touchwood, we received about 20,000 worth of donations. Great. And that helped us out, and they started enabling us to do more donations. So really, with the donation, Rashim Bhai can also admit, it's £5,000 to St. Luke's. And we bought a patient's monitoring unit, Infinity 450, costing £12,000, donated to Northwick Park Hospital from in the last month. And then during this was a unique monitor, because most of the monitors you can't take along with you when you have to change the hospital from one when the patient has to go from shifting from one hospital to other hospital. But this is a unit. That's right. Yeah. Yes. Yeah. All his records would be there, even if he has to be transferred from one hospital to another hospital. Yeah. This is a unique monitor. We can arrange for this cataract operations to be done. So that way, and again in Mumbai,
was coming, so we then started distributing fruit and all the way to 800 people. And again, some of the portion of the money has been sent to Uganda and also Africa Children's Orphanage and all that. In order to send them. So this invites us to do. So recently we saw this coronavirus has got a very bad impending. During that, what should we do? Rashmi Bhai and we all got to, and then now we got the support, and we arranged for 200 on concentrator to be delivered in India, and it is costing us nearly about 170,000 pounds. And touch wood, we have collected 100,000 pounds, 110,000 pounds. That's a huge amount which you have collected. Yeah, and the first payment of that is already left today, Delhi. So, can you please tell me, what did you send in that particular consignment? The concentrator. Yes. Concentrator. Sir, we have sent 100 oxygen concentrators. That's great. That is going. And how will you monitor that these concentrators has reached to the right hand with the right people and these will be fully utilized? It's going to a charity. Our actor, what do you call a cricketer, Gautam Gambhir. So he is really serious about this? So Mr. Gambhir is really serious about it? Yeah, he's got a charity and we are helping them. So he's going to monitor and tell us each and every item where it's gone. And now with the other one, waiting for £600 to be collected. And as soon as we receive the donation, then it will go in 2 weeks. So it's another 100. So we have committed ourselves to the program. That's great. And pledged for 200. So you have pledged for 200k and you have already sent stuff of 110k. So you. That's right. Yeah, we pledged for 170. So we want 60k to help us out. So people, please come and help us out, and they can go on the Mark Rupa Foundation and just giving page, and they can donate me, and it will help us out. And at the moment, people need us. मैं बहुत सरप्राइज होता हूँ इवन ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि उम्र के इस पड़ाव में आप न सिर्फ आप दोनों बल्कि जो आपके साथ के जो लोग हैं मैंने जैसा पहले 2 बार कहा कि उम्र के इस पड़ाव में लोग सेटिस्फैक्शन के साथ उनको लगता है कि जिंदगी जैसे जीनी थी जी ली अब उम्र के इस पड़ाव में कुछ ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है यू आर रेजिंग एंड यू आर कमिटिंग 170k सप्लाई फॉर पर्टिकुलर चैरिटी इन दिल्ली I think that's a commendable. I think मुझे लगता है कि you have already raised 110k, so you are short of 60k. जवानी में हम सब अगर हम सोचे बूढ़े तो ना, you have to have a positive thinking, love and pride to help others. Yes, I think ये आप आगे बढ़ सकते हैं. आज के इस कार्यक्रम में इस डिस्कशन से जो मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि ये जो करने की इच्छा या लोगों के लिए कुछ बनाने की इच्छा है वो जिंदगी में एक बहुत अनंत काल तक जा सकती है जहां आदमी का इवन शरीर साथ ना दे तब तक ये अंदर आत्मा में ये लौ जलती रहनी चाहिए कि वो दूसरे लोगों के साथ अपना जीवन कैसे काम आए पर मैं इससे वाकई में बहुत प्रभावित हूँ कि इस तरह से का जो आपने 170 के जो प्लेज किया इस कोविड 2 वेव के लिए जो भी इंडिया में स्पेशली यू आर वर्किंग विद गौतम गंभीर इसके अंदर ये भी बात है और भी बात सुनिए कि हम जब भी लास्ट क्रूज में गए तभी वी हैड पीपल ओवर 83 years old. They were unfortunate people like disabled people. They were with us, and we used to hire a conference room and have our own DJ, and we used to play and dance and everything. तो हम क्या कहते हैं मौज भी करो, ऐश भी करो और लोगों की दुआ भी लो साथ. मुझे जो आपके बोलने का अंदाज है उससे वापस मैं रोक नहीं पा रहा हूँ आपको वापस फारूक अब्दुल्ला से कंबाइन करने में लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब भी मैं उनको भी देखता हूँ इस
मस्त मौला अंदाज में तो लगता है कि वो गीत गाने के भी बहुत शौकीन है. बाय एनी चांस रमेश जी, डू यू सिंग? मैं गाता तो नहीं हूँ, सिर्फ कविताएं लिखते हैं. कविता लिखता, मुझे गाने का इस पूरे कोविड के प्रोजेक्ट में, इस पूरे कोविड के इस वेव 2 में जो आपने अब तक का कलेक्शन किया है, उसमें किन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और फंड रेज आपने कैसे किया है, उस पर कुछ लोगों को आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? Yeah, I think Rashmi bhai should highlight this collection of this, and then also I'll also join in. Rashmi bhai, please. Yeah, our foremost donor is someone who lives 6 months in India and 6 months in UK, and he wanted to donate. He wanted to do some give some donation, and but he wanted to do it through a charitable organization established in UK. In fact, he is a client of someone whom we know very closely, and he happens to be Jayanti Bhai's son. And he approached Jayanti Bhai and said, we have to do this one because that's the charity he knew that his father was running. And it all started from there. Because this gentleman particularly, if you don't mind, I'll come in. He was inspired by what work we are doing. If they go into this Just Giving site, they'll see that what work we are doing. And at the moment, because people have got confidence in us, they're trusting us. Yes. They are ready to give donation. Because there are many places they give donation, they don't know where it's heading and where it's ending. So we can imagine then when we people have they do not have 10,000. an end-to-end transparency that what is happening with the funds and who is handling with them. Yeah. How do you make sure? I know you have told me that Mr. Gautam Gambhir, who is cricketer and who is also an honorable MP, will take care of these things. But how will you make sure so that people, those who donated, they will know the clear picture what is happening? We have got our own office in Delhi. Our relation has got office, and he's going to monitor. And we are monitoring. We keep an eye on everything what's been happening. Otherwise, it's not worth taking money and chances. I mean, it's cheating if you do that way. But we want to get people's love, right? And we want to bless them. ऊपर वाले ने तो bless करना है, क्या करना है, कोई नहीं, पर जब तक हम जिंदा रहे तभी तक हमने ये काम करता रहना है. कोरोना वायरस के लिए एक बात मैं एक बोलता हूँ कि my hats off to all the people, all the doctors, nurses, जिन लोगों ने अपनी जान को खतरे में रख के काम किया है सब जगह पे, सब दुनिया के जगह पे, उसके लिए मैं hats off. And those people वॉलंटियरिंग जो है, ये वॉलंटियर्स है और संस्था है सब जो कर रही है, वो सबको दे रही है. अभी यहाँ भी काफी टेम्पल से सब वो खाना दे रहे हैं सबको, घर के अंदर भी और वहाँ भी भेज रहे हैं. ये शायद जो देने का सिलसिला है, ये इंसान के अंदर की एक फितरत है. जब उसे लगता है कि दुनिया, देश या समाज संकट में है, वो हमेशा देने के उस मोड में आ जाता है. आज का जो कार्यक्रम हम रश्मि भाई और रमेश जी पोपट के साथ कर रहे हैं, ये हम सब का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम उम्र के इस पड़ाव में पहुंचे हुए वो लोग जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं हम सब के लिए, और फ्यूचर में जो जज्बा दिखा रहे हैं कि आगे के चैलेंजेस के साथ कैसे काम करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है. कोविड-2 की सिचुएशन ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ कहते हैं कि ये एक आंसू का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, मुझे तो सारा देश ही प्यासा दिखाई देता है. तो शायद पूरा देश प्यासा है और जो हमसे हो सकता है वो हमें करने की कोशिश करनी चाहिए, पर खुद के अंदर की जो शम्मा है उसे जलाए और उसे रोशन करते रहना चाहिए. ऐसी ख्वाहिश के साथ आज मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा. शुभ रात्रि, और अगले हफ्ते 711 स्काई पे, MA TV पे थेम्स स्पीक्स में आप सभी से रूबरू होंगे. नमस्कार.